Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National. So today SBI notification came and surprisingly their vacancies are lower than preceding years. Usually SBI comes with 2000 vacancies and this time there is 1600 vacancies plus some backlog vacancies. And now this has resulted into some panic reaction in some of the candidates and they are unable to understand the overall banking scenario. When we say the number of vacancies in banking will increase, we have to see the overall scenario. In public sector bank, there are 12 banks. 11 are nationalized bank and one is called State Bank of India. And these are Bank of Baroda, Bank of India, Bank of Maharashtra, Canara Bank, Central Bank of India, Indian Bank, IOB, PNB, Punjab Sind Bank, UCO Bank, Union Bank. These all 11 banks put together, they have a unified selection process through IBPS. For that, they conduct exam under the banner of IBPS PO and IBPS clerk. Then there are various RRBs, they conduct another exam for group of RRBs. And then SBI undertakes its examination separately for PO as well as clerk. Now, when we say vacancies will increase overall in banking, we are talking of nationalized pack. Nationalized pack means that is comprising of 11 banks. Because when there is more than one bank, then the permutation and combination makes the situation that vacancies may rise over last year. Because some of the banks have not taken officers or clerk last time, they may take this year. Some of the banks, those have taken last year, they may not take this year. So overall in aggregate, there may be increase in vacancy in one bank, there may be decrease in vacancy in another bank. Put together, total vacancy increases. And that's why during the entire year, to motivate you, I am telling you the overall scenario. Some people are unnecessarily misunderstanding that there is a fall in vacancy in State Bank. It means there is overall decline in vacancy in banking sector. No. I told you that in IBPS PO, my own anticipation is the vacancies will rise to 10,000. And in IBPS clerk, the vacancy will rise to 13,000 and both these vacancies are higher than last year. As far as State Bank of India is concerned, in clerical, they have retained the same number of vacancies that was last year, that is 5,000. But in SBI PO, they have reduced 400 vacancies. So if we will be over discussing the fall of 400 vacancies in State Bank and ignore increase in vacancy in IBPS PO and IBPS clerk, we are unnecessarily entering into an era of, you can say, dissatisfaction. If vacancy in one bank have reduced, it is not a very big thing. But if vacancies in another bank rises, then more people are getting the job. State Bank being a solo bank, and they were used to take 2,000 and there may be some compulsion this year, they have reduced it by 20%. But it is not going to affect the overall scenario of banking where you will see uptick in total vacancies. The total vacancies means the total number of people getting employment in the overall pack of public sector bank that includes 11 nationalized banks and one State Bank of India. And all along I am always talking about nationalized banks because State Bank you can't predict. State Bank is an unpredictable bank. Similarly, RRBs is confined to very limited areas. So we never discuss RRBs. All along in my videos, I am discussing about the nationalized sector. IBPS clerk and IBPS PO. If you will go through those videos, we have clearly used the word IBPS PO and IBPS clerk. And IBPS PO, IBPS clerk will continue to have larger vacancy this year than last year.
Why I am making this video? To make the point clear, because some people are unnecessarily worried about fall of 400 vacancies in State Bank, but they are not appreciating that there is going to be increase in vacancies in both IBPS PO and IBPS clerk, where they have to focus for the selection. If opportunities in one sector is increasing, one set of banks is increasing, put your more energies there. If in another set of bank it is falling, you should have lesser opportunities. So it is part of life. So unnecessary drawing negativity from a single event of fall of just 400 vacancies, whereas the vacancies in thousands are increasing on the other side, that is IBPS PO and IBPS clerk, will only harm you. Remain positive, think positive, remain motivated, then only you will be able to achieve your goal of getting the job. And that's why I'm making this video, just to put a word of caution in each one of you. Looking at SBI PO notification, fall in vacancies may give some negative thoughts. But if we look at IBPS PO and IBPS clerk, there will be increase in vacancies. So overall scenario is that more people will get job in the banking sector. That is what I am telling all around, and I will continue to say that. There is no change in my stance, and I continue to say that. State Bank is always unpredictable. Last year they reduced the vacancy in junior associate. Prior to that, they were used to take 8,000. They reduced it to 5,000. This is SBI prerogative. But as far as entire pack of public sector banks is concerned, especially nationalized sector is concerned, the total vacancy will be higher because they are showing remarkable improvement in their health. God bless you. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। SBI PO की वैकेंसीज आई, सरप्राइजिंगली इस बार ये कम है लास्ट ईयर से, 1600 है प्लस कुछ बैकलॉग वैकेंसीज हैं, यूजुअली 2000 आती हैं। इसको लेके काफ़ी लोगों में चिंता आ गई है कि ये क्या हो गया, तो वैकेंसी गिर गई, हम तो ज़्यादा वैकेंसी की उम्मीद कर रहे थे। इसको हमें पूरा सही ढंग से समझना होगा। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें टोटल 12 बैंक है। एक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और 11 बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक। ये जो 11 बैंक हैं ये इकट्ठा मिल के रिक्रूटमेंट करते हैं IBPS PO, IBPS क्लर्क के थ्रू, और तीसरी रिक्रूटमेंट होती है RRBs की। SBI अपनी रिक्रूटमेंट सेपरेट करता है। अब अगर हम ये बात कर रहे हैं कि वैकेंसीज बढ़ेंगी, तो हम हमेशा IBPS PO और IBPS क्लर्क की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ बैंक्स हैं, तो किसी बैंक में वैकेंसी बढ़ जाएंगी, किसी में घट जाएंगी, एग्रीगेट बढ़ जाएंगी। जबकि SBI सिंगल बैंक है, तो उसमें हमेशा संभावना है कि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है, क्योंकि काफ़ी साल से 2000 ही फिक्स है। इसलिए हमारे सबके दिमाग में एक फिक्स हो गया 2000 होना चाहिए, 1600 हो गया तो बहुत नुकसानदायक चीज़ होगी। अगर हम इसमें नेगेटिव थॉट्स में जाएंगे तो इसमें हमारा ही नुकसान होगा। 400 वैकेंसी कम हुई हैं, पर हजारों वैकेंसी IBPS PO और IBPS क्लर्क में बढ़ने वाली है और बढ़ भी चुकी होंगी उसमें से काफ़ी। तो जो IBPS PO है उसमें मेरा अपना मानना यह है 10,000 प्लस वैकेंसीज होंगी, IBPS क्लर्क के अंदर 13,000 प्लस वैकेंसीज होंगी। तो ओवरऑल बैंकिंग में जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी वो ज़्यादा है देन लास्ट ईयर। आज भी कई अखबारों में फिगर आई है कि टोटल बैंकिंग में इतने रिक्त पद भरे जाएंगे, हम उसको इतना कॉग्निजेंस नहीं ले रहे हैं। मगर मेरा जो अपना मानना है, जो मैं बार बार आपको कहता आया हूँ, वो हमेशा IBPS PO और IBPS क्लर्क के लिए कहता आया हूँ। क्योंकि अभी मैंने देखा जब SBI की वैकेंसीज कम आई है तो कुछ लोग उसमें मिस नॉर्मर बना रहे हैं कि सर आपने कहा था बढ़ेंगी या तो घट गई। SBI के लिए कभी हमने बातचीत नहीं की,
क्योंकि एसबीआई एक सरप्राइजिंग बैंक है, सिंगल बैंक है, उसमें बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। पर जब हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, नेशनलाइज बैंक्स की बात कर रहे हैं, आईबीपीएस पीओ की बात कर रहे हैं, आईबीपीएस क्लर्क की बात कर रहे हैं, वहां पर डेफिनेटली वैकेंसीज हायर होंगी इस साल। तो हमें पॉजिटिव न्यूज को देखना है, पॉजिटिविटी के साथ काम करना है। अगर एक जगह 300-400 वैकेंसी कम हो भी गई और दूसरी जगह 1000-2000 वैकेंसी बढ़ रही हैं, तो ओवरऑल अपॉर्चुनिटी तो बढ़ रही है। हमें इसी चीज़ को समझना है और सोचना है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे लगा कि 1600 वैकेंसीज देख के निराशा के भाव में जा रहे हैं, जो आपको डैमेज करेगी। अगर आप निराश होकर बैठ गए तो आपका बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। ये टाइम है जब एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, अपने अंदर आशावादी अपने को बनाए रखना। और आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क आपको एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं सिलेक्शन के लिए। अगर आपने आज का भी रिजल्ट देखा होगा, काफ़ी वो लोग पास हो गए हैं जो पिछली बार पास नहीं हुए थे, या जो दोनों आरआरबी के एग्ज़ाम में नहीं पास हुए वो क्लर्क में पास हो गए। आईबीपीएस पीओ में भी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हमें पॉजिटिव मन से आगे बढ़ना है। स्टेट बैंक ने वैकेंसी घटा दी हैं या थोड़ी सी घटा दी हैं या ज़्यादा घटा दी हैं, इस चर्चा में पढ़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। जो सामने या यथार्थ है उस पर चलना है। मगर ओवरऑल बैंकिंग वैकेंसी इस साल पिछले साल से ज़्यादा होंगी, हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये सोच के हमें आगे बढ़ना है और पॉजिटिव माइंड से अपनी तैयारी करनी है। गॉड ब्लेस यू ऑल।